गुड इवनिंग पिला माने कौन केमती अच्छन समस्ते आशा मोर समस्ते एकदम भलरे थिबे एंजॉय करथुबे एग्जाम पाई भी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से चली थिबो फिलहाल अबे किसी एग्जाम नहीं ओएसएसटी टी आसी गलानी जो माने भी जाई को ओएसएसटी रो फॉर्म फिल अप करी ना जल्दी जल्दी जाई को ओएसएसटी रो फॉर्म फिल अप करी नियंतु ठीक अछि ओके तो जो माने लाइव रे एबे अछंती मते टिके जणे दियंतु कि मो वॉइस आपण मानको ऑडिबल होउची ना नाही सत्यव्रत नाई गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जितु नाई गुड इवनिंग ओडिया फैक्ट एंड टेक आज्ञा ठीक अछि हां आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपण देखि परथबे हमर कमेंट सेक्शन में पड़ी जाई छी मोर टेलीग्राम आईडी टा लिंक पड़ी जाई छी लिंक रु जाई कि जॉइन हे जानतु मो टेलीग्राम आईडी रे ओके जितु नाइक बेसी दिन पर कौन करिया छुट्टी फुट्टी सब पड़ी गला अच्छा आपण माने मते कहंतु कार्तिक पूर्णिमा रे कले कोन कुआड कुआडे गले को डंगा भसेइले कि नाही कि कोन कले मते के जणेबे ठीक अछि ओके तो क्लास स्टार्ट करिया पूर्व आपण मन द थंबनेल देखि जानि थिबे आज हमर क्लास कोन अछि असेसमेंट एंड लर्निंग ऑफ लर्निंग रो एमसीक्यू ओके आ बाकी रहिला सेटा भी जानिया पूर्व आउ गोटे मेन जिंस जो माने वैष्णवी सिका गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग आयुष्मान गुड इवनिंग मैम वेरी गुड इवनिंग ओके नॉन वेज अरे हाँ छाड़ खाई बस बस रुचिस्मिता धर्म डंगा ताले छाड़ खाईटा भलरे मना हेची कार्तिक पूर्णिमा ठू तो मत कहतु बाकी छाड़ खाई कौ दिन मनइले समस्ते शनिवार मनइले ना रविवार दिन छाड़ खाई गले डंगा बसैली चांदीपुर रे बढ़िया बढ़िया ठीक अच्छी तो आमर पेड बैच ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो गलानी जो माने पेड बैच रे जॉइन हे नहांती जाइंके जल्दी जॉइन हो जातु ठीक अच्छी आउ आपण मानको प्राइस जेतिकी भी शो करूथिबो जदि आपण मो कोड अप्लाई करिवे EZSN ताहाले आपनको डेफिनेटली प्राइस बहुत कम मिलेबा सत्यव्रत नायक संडे रे ओडिया फैक्ट संडे अच्छा ठीक अछि प्राय लोक संडे रे ही करिचंती सैटरडे के करि नांती एते ओके मो कोड होची EZSN जो माने बे पंत जॉइन करी नांती पेड बैच रे जाइंके जॉइन करि जानतो जोतरे आपनको मिल जिवो 300 प्लस मॉक टेस्ट 14000 प्लस मिल जिवो प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट्स सब प्रकार बढ़िया बढ़िया जिनस आपनको मिल जिवो कोथरे पेड बैच रे ठीक अछि ओके ओडिया फेट कोचंती आपण छाड़ खाई मानले में मोर तो सब दिन छाड़ खाई मोर सब दिन छाड़ खाई मोर सेंती किछि बाच्चा विचार नै ओके तो यहाँ थिला पेड बैच कथा आउ गोटे कथा होची हमर यूट्यूब चैनल जॉइन हो जातु जार होची कोन ओडिशा टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक जो मन जॉइन हे नांती सांग मन तो शेयर करी नांती जल्दी शेयर करंतु जॉइन हो जातु कोथरे यूट्यूब चैनल रे आउ बाकी रहला हमर एटा होची टेलीग्राम आईडी मेनटा ओडिशा टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक आउ जो माने मो सहित पर्सनली कनेक्ट रहउ चाहउछन सेमानक पई होची एटा पेडागोजी बाय सुभस्मिता मैम ओके लिंक आपण माननको मिल जाई छि कोठी कमेंट सेक्शन ने जाइंगे जल्दी जल्दी जॉइन हे जानतु बिल्कुल भी लेट करेनि एबे जति अछंती मु समस्तंकर चाहू समस्त जॉइन हवा दरकार ठीक अछि तो कौन क्लास स्टार्ट करिबा ना और टिके समय गपसप करिबा क्लास स्टार्ट कर दबा ताले कौन कहउचंती पिला माने क्लास स्टार्ट करि नबा लास्ट बेलू गपसप करिबा आज 50 टा अछि एमसीक्यू सारिबा जिबा आमर 50 टा एमसीक्यू सहित मे भी सरी जीव आमर कोडा असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला जो सेकंड वाला पार्ट अछि सेटा सरी जीव फर्स्ट पार्ट रो दिने क्वेश्चन करना माने जोथि रहउछ आमर असेसमेंट रो फॉर्मेटिव सबमिटिव ए सब रहो जोटारे सेटा रो दिने एमसीक्यू नै आसीबा तापरे नेक्स्ट क्लास नै आसीबा ता जो तळ पार्ट ता जोटा होची प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट आइटम डेवलपमेंट ऑफ ब्लूप्रिंट ए सब रो जा सब रहला से सब रो गोटे नै आसीबा अभिषेक गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग ओके ठीक अच्छे ताले क्लास स्टार्ट करना डेरी न करी जो माने आसी नांती जल्दी जॉइन हो जाओ जदि सांग माने पाखर के अछंती जो माने प्रिपेयर होउचंती जल्दी जल्दी शेयर करंतु आज रो क्लास एकदम मजेदार हबार अछि ओके तो आपण माननकु स्लाइड रे प्रथम क्वेश्चन देखा होउथिबो
तो चलतु प्रथम क्वेश्चन आंसर करनबा। क्वेश्चन कौन कहूँ, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग रो प्राइमरी गोल कौन, टू असाइन ग्रेड टू स्टूडेंट, to improve teaching method, to monitor progress of student and guide future learning, to evaluate the effectiveness of the curriculum. B Panda, good evening ma'am, very good evening. Okay, अच्छा आउ गोटे जिनस आज आम जी भी MCQ अच्छी रूपश्री वन सी, हाँ आम आज जी भी MCQ अच्छी प्रायतः बहुत सारा क्वेश्चन आम रिपीट होती OSSTT हो OTT हो बाकी सारा जिनस LTR RST जेटी एम सब बहुत सारा जिनस कौन है रिपीट टिके तो से प्रति भी ध्यान देबे। सत्यव्रत कहते सी। ओके ठीक अच्छी आउ कहीं ओके असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने आपण मन जानिथिबे मु क्लास रे कहि छी असेसमेंट फॉर लर्निंग माने होची फॉर्मेटिव ठीक अछि आउ कोन ऑफ हो हमर कोन समेटिव। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मेन मोटो कोन रहिला खाली पिला को ग्रेड दबा नाही टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करियर साहाय्य करे हम कहि परिबा टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड गाइड फ्यूचर लर्निंग। ओके तो सीटा हमको अप्रोप्रिएट लागुची अप्रोप्रिएट कोन एटा ही ठीक अछि। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमको हेल्प करे कोन पई स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेस पई आ गोटे स्टूडेंट को गाइड करिबा पई ठीक अछि। टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम सी होची
हेलो एबे ठीक ठाक अच्छी तो पिला माने हेलो ओके ठीक अच्छी ओके तो टिके डेरी ही गला स्टार्ट कर नबा ठीक अच्छे तो एटार तो बी थिला करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा in AFL assessment for learning how should teachers use feedback to benefit student to help student understand their mistake and improve their learning to ठीक है पड़िबा पिला माने एबे ठीक अछि ना टिके जणैले हां एबे ठीक अछि बोधे एबे ठीक ठाक अछि तो एबे साउंड अछि यस ठीक अच्छे ठीक अच्छे 3 नंबर आंसर दिंतु हाउ शुड टीचर्स यूज फीडबैक टू बेनिफिट स्टूडेंट एक्चुअली आज टे माइक रो प्रॉब्लम अच्छी तो टिके असुविधा होउची कौन करिया ओके तो जो मैंने भी 3 नंबर आंसर ए दे करेक्ट आमको मेनली कौन टीचर को पाखर फीडबैक ये ही आसे टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग पिला माने तांको भूल को केमती बुझिबे आ सेथिरे काम करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू असेसमेंट फॉर लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू असेसमेंट फॉर लर्निंग आंको भितर कोउटा एकदम बढ़िया से डिस्क्राइब करा जाइछि टीचर्स assess student learning only at the end of the term okay student are passive recipient of feedback teachers involve student in setting learning goal and reflecting on their progress feedback is only given to students who perform well 3A 4C ना टिके कट ऑफ होची मझिरे मझिरे वैष्णव शिखा ठीक अछि टिके असुविधा हो जाजी माइक रे ओके Okay, 4C. Teachers involve student in setting learning goals and reflecting on their progress. Student centered. ए जगह टीचर कौन कर स्टूडेंट को इन्वॉल्व करुँच ठीक अच्छे फीडबैक इज ओनली गिवन टू स्टूडेंट हु परफॉर्म वेल केवल से मानक फीडबैक दिया हबो जो माने भल परफॉर्म कर बाकी मानक ऊपर कौन दिया जीव नहीं प्रेशर
स्टूडेंट आर पासिव सब बड़े मन रखिए स्टूडेंट एक्टिव थांती टीचर्स आसेस स्टूडेंट ए जगह टीचर जो जगह स्टूडेंट को आसेस कले एटा हे गला हमर टीचर सेंटर्ड एटा हमें स्टूडेंट सेंटर्ड बोली कहि परिबा नाही तो ऑप्शन सी इज करेक्ट रूपश्री सी अनुषया सी ठीक अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट रोल डज सेल्फ असेसमेंट प्ले इन एएफएल असेसमेंट फॉर लर्निंग रे सेल्फ असेसमेंट को प्रकार रोल प्ले करे It encourages students to grade their own work. It allows students to reflect on their strengths and areas for improvement. It eliminates the need for teacher feedback. It focuses solely on summative judgment. केवल summative judgment ऊपर focus करे. Self assessment कोउथरे role play करे? Assessment for learning. स्वागत है C 4C. Okay, जो माने for Mr. Badal creative. Okay, जो माने C कोउथले एकदम correct कोउथले 5B. It allows students to reflect on their strength and area for improvement. ठीक अछि okay okay it encourages students to grade their own work. okay self assessment रे कोन कहूची निज काम को माने own work केवल निज काम को ही ग्रेड प्रोवाइड करियो बस सेटा नुह. It allows students to reflect on their strengths and areas for improvement. आसे सेल्फ असेसमेंट रो मेन होची पिला त निज काम को निजे करिवो ओके त निजु को से कोन करिवो फीडबैक प्रोवाइड करिवो आ त को एरिया रे केमिति से इंप्रूव करिवो ता ऊपर ध्यान दबो ओके 5B यस 5B नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इफेक्टिव असेसमेंट फॉर लर्निंग स्ट्रेटजी गिविंग स्टूडेंट्स ए फाइनल टेस्ट विथ नो प्रायर फीडबैक प्रोवाइडिंग rubrics and criteria for success before an assignment begins, using standardized tests to measure overall achievement, assigning homework without providing any class discussion. स्ट्रेटजी हो परिबो 6B अच्छा ए कोन कहूची गिविंग स्टूडेंट फाइनल टेस्ट विथ नो प्रायर फीडबैक ताको किसी फीडबैक ही दबानी गोटे टेस्ट रे ही फाइनल टेस्ट रे पहुंच जिबा प्रोवाइडिंग rubric and criteria for success before assignment begins ठीक अछि using standardized test to measure overall achievement okay assigning homework without any classroom discussion अबे भी लेट हो गला ठीक है किसी ने एबे ही स्टार्ट है डोंट वरी 6B ओके यस 6B इज करेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग रो मेन स्ट्रेटजी होची पिलांगो पई कोन प्रॉपर रूब्रिक आ गोटे क्राइटेरिया सेट करबा ताको निजरो कोन करिया पई इफेक्टिवनेस बढ़ाया पई वॉइस आसुनी अगेन ओके हेलो एबे ठीक अछि साउंड आसु जे एबे 7B आसु साउंड बहुत बकवास आसु साउंड
ठीक अच्छी एबे ठीक ठाक शुभुची ना बहुत स्लो शुभुची बैकग्राउंड नॉइज बहुत होची अच्छा ठीक अछि 7 नंबर आंसर कहंतु हाउ कैन peer assessment contribute to the assessment for learning progress by providing student with the opportunity to grade okay by providing student with the opportunity to grade each other's final exam by encouraging collaboration and critical thinking during the assessment process by eliminating the need for teacher involvement in grading by determining the final grades for student कोडा हे परिबा ठीक अछि साउंड क्लियर एबे ओके ठीक अछि थरे थरे सुबुजी पुणी सुबुनी हां आज टिके प्रॉब्लम होउची लगे देबे साउंड पड़ेबा 7B पुणी गला बोधे गला गला हां एबे ठीक ठाक सुबुजी जोटी टिके जदी वॉइस जाउची मोर मत टिके जणे देबे 7B ओके by encouraging collaboration and critical thinking during the assessment process आपण में गोटे जिंस जो जगह देखिबे क्रिटिकल थिंकिंग सेटा सब बेले गोटे पॉजिटिव जिंस हेतिबो पेडागोजी एटा गोटे पॉजिटिव टैग जोटी थिबो क्रिटिकल थिंकिंग आउ हमर देछि कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग माने कोन फॉर्मेटिव जो जगह आपण देखिबे ड्यूरिंग फॉर्मेटिव अछि बा फॉर अछि मारि देबे सेही ऑप्शन टाकू ओके एटी फाइनल एग्जाम देछि एटू फर्स्ट काटिले by eliminating develop involvement in grading तो हबो नहीं by determining the final आसी गला हमु के जगह केवल ड्यूरिंग देखियार छै ड्यूरिंग देखिले आंसर बुलेले आगु को चले 7 नंबर सरला 8 नंबर देखिबा यस ठीक अछि 8 नंबर क्वेश्चन इन असेसमेंट as learning what role do student play in the assessment process students passively receive feedback from the teacher student only complete assignment without any reflection student only evaluate their peers work not their own student engage in self assessment and reflection to monitor and direct their own learning थरे टिके कोड वर्ड गुडा कहि देबे पेडागोजी पई को गुडा पॉजिटिव अभिजीत लिंकन okay 8D student engaged in self assessment and reflection to monitor and direct their own learning okay स्वागतिका 8D रूपश्री 8D अभिजीत D okay assessment as learning हमर कोन ए जगह कोन सेल्फ असेसमेंट कहि परंती बा पियर असेसमेंट कहि परंती ए जगह हमर हेई थाए ठीक अछि okay student engagement self assessment and reflection to monitor and direct their own learning जो जगह हमर सेल्फ असेसमेंट आसी गला आपण आखी बंद करके मारी देबे कोन असेसमेंट as learning student only evaluate their peers work खाली तांको peers को evaluate करिवे तांको निजर नुह एटा तो हबो नै student only complete assignment without any reflection खाली assignment complete करियर फोकस करिवे student passive आसी गला माने ऑप्शन डी हमर हबो नै ऑप्शन डी इज करेक्ट जो माने ऑप्शन डी कहिचंदी समस्त को गोटे गोटे माइक टे लगे दियु तो ठीक हबो लगे देले ही कटि जाउची आई थिंक एमती धरी छी ठीक अछि ओके जो माने आंसर डी कहिचंदी समस्त गोटे गोटे चॉकलेट 9 नंबर कोंदु कोन हबो what is an important strategy for promoting self assessment in the context of assessment as learning okay self assessment in the context of assessment as learning giving student the answer to assignment before they begin encouraging students to complete all assessment without any feedback teaching students how to use specific criteria to evaluate their work and identify areas for improvement relying only on teacher assessment and not allowing students to evaluate themselves only अछि माने हबनी only टा हमर कोन नेगेटिव वर्ड only टा हमर नेगेटिव रे जीवो
व्यस्त हुँतुनि आपण मोड़े नहीं आसी वीडियो जो आपको केवल पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स गुड़ाक थी आपण मानक सहज हम 9C teaching student how to use criteria to evaluate their work and identify areas for improvement before the begin giving student answer first पिला को आंसर दे दबो तापर तांको कोन से किछि करिया पूर्व माने तांको कॉपी करिया पई रोट लर्निंग मेमोराइजेशन ए सब जिंस पई तांको एनकरेज करबो हबनी एनकरेजिंग स्टूडेंट टू कंप्लीट ऑल असाइनमेंट ऑल असेसमेंट विदाउट एनी फीडबैक पिला मानु कोन जगह फीडबैक ही प्रोवाइड करबनी कि तांको असेसमेंट करे चलिबो ए जगह तो हबनी पिला कोन ता निज विषय कि जानिया को ही पाइबनी रिलिंग ओनली आसी गला ओनली गोटे नेगेटिव टर्म ते जगह आपण से ऑप्शन टा काटि देबे 9C only passive negative words yes only and passive हो हमर कोन negative words option C is correct teaching student how to use specific criteria to evaluate their work and identify area improvement जो मन 9C कहचंती समस्त को ताली okay next question what is the main difference between assessment for learning and assessment of learning assessment for learning and of learning भितरे कोन difference कोन assessment for learning is used to make decision about final grade of learning is used for ongoing learning feedback assessment for learning focus on using assessment to inform and improve learning while assessment of learning is used for evaluating final outcome assessment for learning is always conducted by the teacher of learning is conducted by the student. AFL is more about summative testing and AOL is formative. एटा को भाभी चिंती की करिवे फीडबैक पिला पाई दरकार मो कहि ठीक अछि एटा हमर इतिहास रे लेखा हबो अभिजित भाई हमर कहिले कि फीडबैक टा पिला पाई दरकार 10B 10 नंबर B ओके असेसमेंट फॉर लर्निंग फोकस ऑन असेसमेंट टू इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव लर्निंग जो माने 10 नंबर बी कहउचंती क्वेश्चन पढ़िया पई टाइम दियंतु आपण देन कहिबे मु जदी न कहिबी ताले हो ठीक अछि ओके ठीक अछि तो 10 नंबर बी को हमें लॉक करिबा हां करिबा कारण असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जे हमर कोन फॉर हो जे फॉर्मेटिव रे हमको को मिलि थाए फीडबैक मिलि थाए ठीक अछि इन्फॉर्म एंड इम्प्रूव लर्निंग ओके असेसमेंट ऑफ लर्निंग कोन हो जे हमर कोन समेटिव रे हमर फाइनल एग्जाम एंड ए सब जिंस हमर कोठी हो जाय थाए फाइनल आउटकम्स समेटिव रे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा What is the primary focus of assessment as learning? Teacher use tests to evaluate student performance. Student assess their own learning to enhance understanding and set goals. The teacher assign grades based on final exam. Student work together to assess each other's final grade. No, mu कहूली आर क्वेश्चन टा सो आपण कहता बोली अच्छा 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 ठीक अच्छे ओके 11B student assess their own learning to enhance understanding and set goals 11B ओके आकाश आर्ट्स B अभिजीत B ओके स्वागतिका B 11B ओके फर्स्ट ऑप्शन हमको टीचर यूज टेस्ट टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस ए जगह टीचर मेनली तांकर काम करूचंती त हमर आज लर्निंग टा कोथि पई थाए सेल्फ असेसमेंट पिला ता निजो को असेस करबा स्टूडेंट असेस देयर ओन ए जगह ता निजो को असेस करूची तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बाकी ऑप्शन देखना बा टीचर असाइन ग्रेड बेस्ड ऑन फाइनल एग्जाम बेस्ड करके आमे जोटा करबा सेतिरे पिलार कोनोसी से कोनता निजो को असेस करि परिबो नाही स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू असेस ईच अदर्स फाइनल ग्रेड पिला माने कोन निज निज भितरे काम करिवे ईच अदर माने जणे आउ जनकर कोन फाइनल ग्रेड्स को कौन करने आसेस करने कि जब फाइनल ग्रेड को आम आसेस करवा धर आम 10वीं श्रेणी रे अच्छा थ्योरी करंतु मैडम वाईटी रे
सिलेबस अनुसार प्लीज ठीक अच्छे सिलेबस अनुसार ही आम चली मैंने फर्स्ट आसेसमेंट पार्ट मुझे सारे कारण से इंपोर्टाट थी एग्जाम आसेसमेंट पार्ट सरला एबे आपण जेतिक भी 50टा एमसीक्यू करेंगे आपणकर जोटा अच्छी बी या सी थी तार थर्ड पॉइंट सेकेंड पॉइंट अच्छी टोटल एमसीक्यूटा ओके तार थियोरी ऑलरेडी आमर अच्छी यूट्यूब चैनल रे ओके प्रमोद पंडा मैडम नमस्ते नमस्ते ठीक अच्छे स्टूडेंट ए जगह सेल्फ असेसमेंट होना ही तो जो जगह आप देखिए सेल्फ असेसमेंट आखि बंद करके मारिदेवे असेसमेंट आज लर्निंग नेक्स्ट लास्ट तो पियर असेसमेंट किंतु पियर असेसमेंट केतेबेल होची फाइनल ग्रेड्स रे तुमको जदि कुहाबो कि नवम श्रेणी परीक्षा अच्छी नवम श्रेणी परीक्षार फाइनल माने समेटिव एकदम से एंड रे जोटा होची सेठी आपण असेस करंतु देन दशम को पळेबे ए जगह रे पिलर कोनटा असेस होला से पूरा क्लास रे कोन कला कोन न कला ताको को जगह रे टिके भलो करियारथिला से जगह तो किसी तार फायदा हेलानी दशम श्रेणी में जाई से कोन करबो ठीक अछि आ एटा हमर ड्यूरिंग भी हेई थाए से जगह रे पिलर कोन सेल्फ असेसमेंट होता है ओके ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट हाउ डज असेसमेंट फॉर लर्निंग हेल्प स्टूडेंट बिकेम एक्टिव लर्नर असेसमेंट फॉर लर्निंग केमिति पिला को हेल्प करूची बिकेम एक्टिव लर्नर बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन गोल सेटिंग एंड फीडबैक बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू मेमोराइज कंटेंट फॉर एग्जाम बाय फोकसिंग ऑन देयर फाइनल ग्रेड रादर देन देयर लर्निंग प्रोसेस बाय लिमिटिंग फीडबैक until the end of a unit ए जगह आपण माने फर्स्ट देखि दियंतु कोटा कोटा आपण नेगेटिव टर्म लागुची तापर सेडा काटि देबे नेक्स्ट जोडा बाकी रहइबो सेथिरे करनेबे 12a रूपश्री 12a ठीक अछि मैडम आपण का फेस पूरा ब्लर हे जाउची अच्छा देखिया पे पड़िबो कोन अछि कोन पे ब्लर होउची ओके 12a समस्त क्वेश्चन 12a by providing opportunity for reflection goal setting and feedback assessment for learning हाँ assessment for learning रो मेन होची कोन पिला को गोल डिराइव करबो पिला को गोटे गोल प्रोवाइड करबो फीडबैक प्रोवाइड करबो ओके पिला को अपॉर्चुनिटी दबो तांको निजरो सेल्फ असेसमेंट पई ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन देखि नबा बाय अलाउइंग स्टूडेंट मेमोराइज ए जगह मेमोराइज आसला तो मेमोराइज होची गोटे हमर नेगेटिव वर्ड ओके बाय फोकसिंग ओनली देयर फाइनल ग्रेड केवल फाइनल ग्रेड ऊपर फोकस करबाटा भी हबो नाही बाय लिमिटिंग फीडबैक अंटिल द एंड ऑफ यूनिट हेले तो ए जगह हमर समेटिव आसी जाउची माने असेसमेंट ऑफ लर्निंग ओके तो ऑप्शन ए इज करेक्ट 12a कुंदन कहउछन सी 12c हबा नहीं कारण दीजिए फाइनल ग्रेड फोकसिंग ऑन देयर फाइनल ग्रेड रादर देन लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट फॉर लर्निंग के सब बेले माने कोन लर्निंग प्रोसेस ऊपर ही फोकस करे फाइनल ग्रेड ऊपर नुहे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज असेसमेंट आज लर्निंग डिफर फ्रॉम असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट आज लर्निंग रो केमिति डिफर असेसमेंट फॉर लर्निंग ओके AAL assessment as learning involve external test while assessment for learning is based on self reflection okay in assessment as learning student focus on self monitoring and reflection while in assessment for learning teachers guide student using feedback assessment as learning is only used for summative purpose while AFL is always formative there is no difference between assessment as learning and for learning 13b तो ये जगह आम ऑप्शन तलटा काटी दबा जोटा अच्छे असेसमेंट आज लर्निंग और फॉर लर्निंग भीतर किसी डिफरेंस ना फास्ट तुम यहाँ काटी नबा बाकी 3टा ऑप्शन देखि नबा एटी जगह आपनकर ओनली आसीगला ओनली तो आपनकर नेगेटिव टर्म काटी नेबे एठी अभिजीत कहउछन सी 13 सी 13 कहउछन 12 12 नंबर क्वेश्चन गलानी 13 नंबर क्वेश्चन 13b ओके ए जगह ओनली आसला ओनली को फास्ट आम काटी नबा बी कहला असेसमेंट स्टूडेंट इन असेसमेंट आज लर्निंग रे स्टूडेंट सेल्फ मॉनिटरिंग करंती बा सेल्फ असेसमेंट करंती ठीक अछि व्हाइल इन असेसमेंट फॉर लर्निंग रे टीचर कोन करंती स्टूडेंट मानन को गाइड करंती यूजिंग बाय यूजिंग फीडबैक ओके एक्सटर्नल टेस्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग होची सेल्फ रिफ्लेक्शन यस आपनकर ऑप्शन बी होची करेक्ट ओके असेसमेंट आज लर्निंग रे सेल्फ असेसमेंट हुए आमर फॉर लर्निंग रे टीचर माने फीडबैक थ्रू रो पिला को असेस करंती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
What is the role of teacher questioning in assessment for learning? To assess the final knowledge of student, to check if students have memorized the content, to stimulate thinking, guide learning and provide feedback, to give student grade based on their response. 13B 13 कुंदन भी कहते बी ठीक है जो मैंने 13B कहते एकदम करेक्ट अच्छी. नेक्स्ट कौन हम कहतु व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर क्वेश्चनिंग इन असेसमेंट फॉर लर्निंग. AFL 14C रूपश्री कहते 14C स्टिमुलेट थिंकिंग गाइड लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक. ओके ए जगह आपनकर मेमोराइज आसीगला मेमोराइज को काटी देबे मेमोराइज गोटे नेगेटिव टर्म. ओके टू गिव स्टूडेंट ग्रेड बेस्ड ऑन देयर रेस्पॉन्स तांको रेस्पॉन्स नहीं कि पिलां को हमें ग्रेड प्रोवाइड करवा एटा तो हब नहीं पिलां को केवल तांको रेस्पॉन्स नहीं कि पिलां को हमें ग्रेडिंग करवा एटा तो हब नहीं. स्टिमुलेट थिंकिंग असेसमेंट फॉर लर्निंग गोटे टीचर रो रोल कौन तार कौन थिंकिंग को स्टिमुलेट करिवो ताको गाइड करिवो आ कोन करिवो फीडबैक प्रोवाइड करिवो. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एटा होजी गोटे टीचर एज ए फैसिलिटेटर आम पई टीचर एज ए गाइड आम टीचर कौन आम गोटे रोल मॉडल. ओके मेनली टीचर काम हो फीडबैक प्रोवाइड करिवो ताको गाइड करिवो तार कौन थिंकिंग को स्टिमुलेट करिवो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग. आंको भितरु कोउटा गोटे भलो एग्जांपल कहारो असेसमेंट एज लर्निंग रो. ए स्टूडेंट यूज ए रुब्रिक टू असेस देयर ओन ड्राफ्ट बिफोर सबमिटिंग इट टू द टीचर. A teacher grades a final exam and give no feedback to students. A teacher uses a summative test to assign grades at the end of the term. Students take a quiz for practice and do not reflect on the result. 14C. वैष्णवी कहते 14C. ठीक अच्छी. Next 15. कौन हम कहतु 15A. A student use rubric to assess their own draft before submitting it to teacher. Assessment as learning. Okay. A. Swagatika A. Akash Arts A. Kundantri 14 सरलानी 15. 15C. 15C. A teacher use a summative test to assign grade at the end of the term. Assessment as learning माने होची ए जगह रे पिलाटी त निज को असेस करबो. असेसमेंट as learning माने होची मेनली आपण मन रखिबे सेल्फ लर्निंग सेल्फ असेसमेंट बा पियर असेसमेंट. ओके मेनली असेसमेंट आज लर्निंग रे सेल्फ असेसमेंट होता है. ए जगह टीचर कौन कला सबमिटिव करिकी पिला को ग्रेड प्रोवाइड कर देला. ए जगह त पिला त निज को किछि जानि पाइला नै असेस ही करि पाइला नै. ऑप्शन सी हबो नै. ओके यस जो माने 15A को होजंती एकदम राइट. कारण देला कि ए जगह रे पिला को कौन कला स्टूडेंट त निज यूज रुब्रिक यूज कला कौन पाई असेस देयर ओन ड्राफ्ट त निज ड्राफ्ट को असेस करिया को माने कौन टीचर का आगे दबा पूर्व फर्स्ट निज को आसेस कला सबमिटिंग इट द टीचर. ओके ऑप्शन ए इज करेक्ट. बी को होची फाइनल एग्जाम. ए टीचर ग्रेड ए फाइनल एग्जाम एंड गिव नो फीडबैक. इनु जदी फीडबैक आसुनी से पिला से जगह रे निज को आसेस ही करि परिबो नाही. स्टूडेंट टेक क्विज फॉर प्रैक्टिस एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट ऑन द रिजल्ट. ओके क्विज नहीं गले कि तार कौन से रिफ्लेक्ट कौन रिजल्ट आसिला नहीं. जदी रिजल्ट आसिला नहीं ताले पिला केमिता निज को आसेस करिवो. असेसमेंट आज लर्निंग ए जगह रे कौन सी भाबरे फलप्रद हो नहीं. ओम प्रकार सेठी प्रणाम मैम प्रणाम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु. ए यस ए इज करेक्ट. ओके जो माने एबे जॉइन हेचंती हमर कमेंट रे एकदम फर्स्ट को पळेबे से जगह रे आपनकर अछि मोर टेलीग्राम आईडी मेंशन हेची. जल्दी जाइंकी लिंक रे जॉइन हे जानतो टेलीग्राम चैनल रे. ठीक अछि जम्मा भी कहीं देरी करिवेनी कि छाड़ीबेनी समझ जाइन जॉइन हेतिबे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. Which of the following is an example of assessment as learning? आंको भितरु कोउटा एग्जांपल कहारो असेसमेंट as learning रो. तो खाली असेसमेंट as learning ऊपर क्वेश्चन अछि. देखिबा आगो आउ कोन क्वेश्चन आछि. A student use a rubric to assess their own draft before submitting it to the teacher. Wait. अच्छा ए क्वेश्चन ना हमर रिपीट हेछि तो आको स्किप करो. 17 को आसो. What is the main benefit of students being actively involved in assessment as learning? Okay.
पिलांको पे बेनिफिट कौन जदि आम असेसमेंट आज लर्निंग रे एक्टिवली इन्वॉल्व रहिबा इट प्रोवाइड इमीडिएट ग्रेड्स it helps student to internalize learning goals and better understand their strengths and weakness it eliminates the need for teacher feedback it allow teachers to focus solely on grading repeated question Simarani Behera good evening very good evening 16a एटा एटा आपन को 17 as काउंट करंतु एक्चुअली 16 तो पळेलानी यस 17b आकाशाट b रूपश्री b ठीक अच्छी ओम प्रकाश बी यस 17b ठीक अच्छी कौन कहला देखिबा इट प्रोवाइड इमीडिएट ग्रेड असेसमेंट आज लर्निंग रे संगे संग ग्रेड प्रोवाइड हे जाय नाही इट हेल्प स्टूडेंट इंटरनलाइज ऑन लर्निंग गोल अच्छा पिला माने तांको निज को कौन करिवे तांको गोल को इंटरनलाइज करिवे एंड बेटर अंडरस्टैंड कौन पाई तांको निजर स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानिबा पाई तो आखि बंद करी हमें बी को ही मारिबा बाकी ऑप्शन हमें न देखले भी चलिबा नीड फॉर टीचर फीडबैक छाड़ो इट अलाउ टीचर टू फोकस होल्ड ऑन ग्रेडिंग खाली ग्रेडिंग ऊपर फोकस करिवे ऑप्शन बी हमको ठीक लागुची ऑप्शन बी रे ही जिबा आपनकर ऑप्शन बी ही टिक जो माने 17 नंबर बी देचंदी बस शाबाश नेक्स्ट आसंतु 18 नंबर इन असेसमेंट आज लर्निंग हाउ कैन टीचर सपोर्ट स्टूडेंट सेल्फ असेसमेंट आज लर्निंग रे केमिति टीचर सपोर्ट करि परिबे सेल्फ असेसमेंट को बाय प्रोवाइडिंग कांस्टेंट ग्रेड विदाउट अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन बाय ग्रेडिंग ऑल असाइनमेंट क्विकली एंड गिविंग नो अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट रिफ्लेक्शन बाय फोकसिंग ऑन समेटिव असेसमेंट ओनली एंड इग्नोरिंग ऑनगोइंग फीडबैक by offering clear rubric and encouraging student to reflect on their learning process एथिरे एकदम माने बाकी सब ऑप्शन नु गोटिया ऑप्शन बाछि हेई जाउची कि कोटार आंसर हबो 18d ओके ओके yes 18d is correct next जो माने d कहउचंदी बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is not a characteristics of assessment as learning अंक भितर assessment as learning रो characteristics नुहे students are encouraged to monitor and reflect on their own learning teachers provide feedback on final assessment only student make judgment about their quality of their work and set goals student engage in self reflection to guide future learning एटा भी एकदम appropriate आंसर आपन को गोटिए ही पळे आसी बाकी ऑप्शन तो बाछि हे जाउची कोटा हेइतिबा 19 19b teacher provide feedback final assessment only following is not characteristics okay yes teachers provide feedback and final assessment only जो माने 19b कहउचंदी एकदम सटीक आंसर नेक्स्ट जिबा हमें 20 नंबर व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर फीडबैक इन असेसमेंट आज लर्निंग गोटे टीचर रो फीडबैक कोन असेसमेंट आज लर्निंग रे टीचर प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर ए फाइनल एग्जाम टू असाइन ग्रेड टीचर solely provide feedback on the purpose of evaluating student performance teacher feedback help to student understand their self assessment and refine their learning strategy teacher provide feedback only for summative assessment एटा भी एकदम appropriate आंसर गोटे ही आपन को मिली जाउची बाकी सब ऑप्शन बाहरी जाउची मते कहीं लागुनी आपन को असेसमेंट आज लर्निंग फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग रे केबे आ एग्जाम रे क्वेश्चन आपन को भूल हबो एत्तिक तो मु श्योर अछि 20c जो माने भी 20 नंबर सी कहउचंदी सटीक यस 20c नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is an example of formative assessment आंक भितर कोउटा एग्जांपल कहारो formative assessment रो final exam quiz at the end of the term ongoing discussion and in class activities state wise standardized test कोउटा 20c जो माने भी 20c कहिचंदी शाबाश यस मैम ठीक अछि ओके एतिके तो मोर चेष्टा एई पार्ट रो जेमति आपनकर क्वेश्चन रे केबे भी भूल हबनी एग्जाम रे जहा भी क्वेश्चन आसीबो एकदम पूरा मस्त मस्त आंसर देगी आपन आसीबे 21 नंबर सी कहउचंती रूपश्री ओम प्रकाश सेठी असेसमेंट फॉर्मेटिव माने कोन ड्यूरिंग आसी जिवो क्लासरूम रे चालुथिबा प्रोसेस हे जिवो इन क्लास एक्टिविटी माने कोन ऑनगोइंग
ये सब आप आसीगला माने आखि बंद करके मारिदेवे सी माने फॉर्मेटिव। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा what is a rubric primarily used in assessment okay what is a rubric जोटा कोठी primarily कोठी used हुए assessment रे to assign grade directly to provide clear criteria and guidelines for evaluating student work to assess the teacher's performance to prepare students for the final exam ongoing yes जोटी ongoing पाइबे मारिदेवे formative जोटी end पाइबे मारिबे summative 22 कोड़ा अब कहूँ जल्दी 22B to provide clear criteria and guideline for evaluating student assign grade directly एटा हम ना assess teachers performance rubric आम गोटे टीचर परफॉर्मेंस को assess करे ना प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फाइनल एग्जाम पिला फाइनल एग्जाम प्रिपेयर करे ना आम रुब्रिक कौन करे गोटे गाइडलाइन प्रोवाइड करे ठीक अच्छे 22B जो मैंने 22B कहते एकदम बढ़िया देन 23 व्हिच असेसमेंट टेक्निक इन्वॉल्व स्टूडेंट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस आंको भितर कोटा स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट करुच्ची पिला ता निज को आसेस करिवो ओन लर्निंग एंड प्रोग्रेस पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट टीचर ऑब्जर्वेशन कोटा पीयर असेसमेंट माने होची सांग साथी मानक सहित जोटा होची ओके स्टैंडर्ड टेस्ट माने होची आपण मानकर ऑलरेडी गोटे स्टैंडर्ड फिक्स अछि आपण को सेही स्टैंडर्ड को पहुंचार आपण ए जगह रे ठिया हिचंती ए स्टैंडर्ड आपण मानक पई ऑलरेडी फिक्स अछि आपण को एउठु डेंग ए स्टैंडर्ड पाखरे पहुंचीवार अछि ओके टीचर में टेस्ट कोन जोटा हमर की करथांती टीचर करिथांती ओके टीचर हमर जो टेस्टटा करिथांती सेल्फ असेसमेंट जो माने आंसर बी कहते सेल्फ असेसमेंट ठीक कारण सेल्फ असेसमेंट रे पिलाटी ता निज को कौन करथाय ता निजर रिफ्लेक्शन को से निजे जानी थाए केमती पढुची कौन करूची सेटा हमर सेल्फ असेसमेंट रे ही थाए 24 व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ए पोर्टफोलियो एज एन असेसमेंट टूल पोर्टफोलियो को एज ए असेसमेंट टूल यूज करिवार मेन पर्पस कौन टू इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम टू track a student's progress over a period of time through a collection of work to provide a final grade at the end of the course to assess students ability memorize fact memorize आसीगला भाभी जी आंसर देबे पोर्टफोलियो मेनली कौन पोर्टफोलियो रे गोटे पिलार 24B बस एमती मते आंसर दरकार क्वेश्चन देखु देखु जंती मो पिलांग पाखरे आंसर थिबो पोर्टफोलियो माने हो जो जगह गोटे पिलार प्रोग्रेस टाइम टू टाइम जोटा चली जो सब प्रोग्रेस आमर मेंटेन हेकी थिबो हेडा आमर कोन पोर्टफोलियो रे जिवो बाकी ऑप्शन आ देखियार नै ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग पीयर असेसमेंट इन द क्लासरूम आंको भितर कोडा गोटे एडवांटेज आमे क्लास रे पीयर असेसमेंट करूचंती इट रिड्यूस टीचर इन्वॉल्वमेंट इन द असेसमेंट प्रोसेस एटा कोन कोची टीचर कर इन्वॉल्वमेंट को ही कमे दोची इट अलाउ स्टूडेंट टू इवैल्यूएट देयर पीयर्स एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ठीक अछि कोन करूची कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पिला को दोची it ensure that every student receives the same grade it only useful for final assessment जगह आपनकर दि तीनटा ऑप्शन एमती ही कटि जीगो नेगेटिव वर्ड देखिकी 25B रूपश्री क्वेश्चन 25B ओके ओम प्रकाश सेठी B it only B it allows student to evaluate their peer and provide constructive feedback it only आसीगला only useful for final exam बा assessment इट कटिगला इट एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव सेम ग्रेड समस्त को समान प्रकार ग्रेड मिलिबो हबनी पिला को एठी कोन जदी मु जण को माने असेस करूची मु ए जगह हमर गोटे कोन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ए जगह हमर डेवलप होउची ओके स्टूडेंट इवैल्यूएट देयर evaluate their peer and provide constructive feedback option B is correct reduce teacher involvement टीचर को इन्वॉल्वमेंट कमे दो टीचर को यदि इन्वॉल्वमेंट न रहिबो पिला कुआड जीवो कोन करिवो सुरेश कुमार साहू बी जो मैंने ऑप्शन बी कहउचंती सब आंसर बी चलची सतरे अरे अरे हाँ सब ऑप्शन बी चलची बस खाली एटा भी बी न बाहरु Which of the following best describe a performance based assessment आंको भितर कोउटा भलो से describe करूची कहा को performance based assessment a test that evaluate multiple choice response
A timed written exam, an assessment in which students demonstrate their knowledge and skills through task or project. It's self-reflection questionnaire on course content. Performance based assessment. Okay, performance based assessment कोटा ही परिबा. It is that evaluate multiple choice response. Multiple choice response रे performance test. ठीक अछि. 26C. पेडागोजी रे आउ गोटे भल जिनस अछि जोटा आपण गोटे बड़ बड़ ऑप्शन देखन ताकू ही ठीक मार देबे. मु तो बहुत एग्जाम रे मारी गई छी जोटा बड़ बड़ ऑप्शन देखिबे ताकू ही मु मार दिए. किंतु सब जगह सेटा अप्लाई हुए नहीं. परफॉर्मेंस बेस होची माने कोन गोटे पिला डी निज परफॉर्मेंस रु त निज को से असेस करबा. ओके, जो मैंने ऑप्शन सी कहउचंती एकदम बढ़िया बेस शाबाश. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जेमिति कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउ ट्रू फॉल्स अंक भितर कोडा ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स. इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव जजमेंट इन स्कोरिंग. इट असेस स्टूडेंट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल. इट हैज क्लियर प्री डिटरमाइंड करेक्ट आंसर. इट फोकस ऑन ओपन एंडेड रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट. की कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा ही परिबो कहार ऑब्जेक्टिव रो जोटी ऑब्जेक्टिव आसी गला से जगह रे ओपन एंडेड अछि. पिला माने जल्दी जल्दी आंसर दियंतु आउरी बहुत सारा क्वेश्चन रही गलानी हमरो सारीबा हमें ताको टिके जल्दी जल्दी. ओके 27C कारण इट फोकस ऑन ओपन एंडेड आमर एटा क्लोज एंडेड ऊपर फोकस करे कोटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आमर फोकस करे ओपन क्लोज एंडेड रे. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल एटा आमर कन्वर्जेंट थिंकिंग रे जाउजे. डाइवर्जेंट थिंकिंग रे आमर आसीबो कोन हायर थिंकिंग से बा ओपन एंडेड रे आसीबो क्लोज एंडेड रे नुहे. इट रिक्वायर्स ऑब्जेक्टिव जजमेंट इन स्कोरिंग. नाइन ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 27C. Yes. What is the primary function of formative assessment? Formative assessment or primary function kon? To assign final grade at the end of a course, to evaluate the effectiveness of teaching curriculum, to provide ongoing feedback that help improve learning during the instructional process, to compare student to set external benchmark. मत कहीं लागुनी मते क्वेश्चन को बुझिया पे पड़िबो. डाइवर्जेंट होची ओपन. यस डाइवर्जेंट होची ओपन. कन्वर्जेंट होची कोन क्लोज एंडेड. 28C जो मान 28C कहउचंती एकदम करेक्ट अछि कारण ऑनगोइंग अछि आ कोन अछि ड्यूरिंग अछि. ड्यूरिंग ऑनगोइंग माने हमरो फॉर्मेटिव. यस ऑप्शन सी इज करेक्ट. Next question, which of the following is a criterion reference assessment? Criterion reference, a test that ranks student based on their performance relative to other. A test that evaluate a student's performance against a predetermined set of criteria or standard. A test used for school-wide comparison. A random quiz with no clear learning objective. Criterion reference assessment माने हमर ऑलरेडी गोटे मैम टिके हार्ड क्वेश्चन आनंतु. हार्ड क्वेश्चन आगु आगु अच्छी आप करी करी चलतु. ठीक अच्छे. ओम प्रकाश क्राइटेरियन रेफरेंस माने हो हमर ऑलरेडी गोटे कौन फिक्स हो जाइए गोटे स्टैंडर्ड ताकू ही आमे क्लियर करियर अछि क्रैक करियर ता पर्यंत हमर पहुंचियार अछि. 29B a test that evaluates student performance against a predetermined set of criteria or standard. Yes 29B. आ गोटे जिनस एबे आपण मानको जो माने टिके पढ़ी जाइछन से मानको ए क्वेश्चन टा मे बी बहुत इजी लागु थाई पारे किंतु जो जो पिला माने जस्ट पढुचंती नुआ नुआ जानुचंती से मानको पई बे क्वेश्चन टिके हार्ड हे जाई पारे. ठीक अछि तो समस्त को देखि क्वेश्चन आनिया. ओके 29 गला 30. What type of assessment tool is most commonly used to assess students oral presentation or performance? Okay आको भितर कोटा असेसमेंट टूल मोस्ट कॉमनली यूज हुए पिला को असेस करिया पे. ओएसएस टीटी एग्जांपल. यस कोंतु कोटा हबर आंसर चेकलिस्ट रुब्रिक ट्रू फॉल्स टेस्ट सर्वे. जदि भी आपण मानको जो माने क्वेश्चन बहुत सहज लागु छी आपण माने करि चलंतु आपण मानकर भी ए जगह रे गोटे कोन हे जिवो प्रैक्टिस हे जिवो. नेक्स्ट जो भी आम क्लास आनिबा मिसा मिसी क्वेश्चन आनिबा जोटा समस्त पई भलो हबो. ठीक अछि
एटा आगु हमर जहाँ भी एग्जाम आसी सेटा को देखि मु टिके नॉर्मल क्वेश्चन आनी छी 30A checklist. With what type of assessment tool is most commonly used to assess student oral presentation or performance? गोटे पिलार oral presentation को आमे कौन जानिबा पई 30C अनुषा सी सुरेश कुमार एटा कंफ्यूज मैम ठीक अच्छी बढ़िया कथा मत खुशी लगे शुणिकी ओके रूपश्री 30A कहते ये जगह कहला गोटे असेसमेंट टूल जोटा कि कॉमनली यूज हुए कौन पाई गोटे पिलार ओरल प्रेजेंटेशन बा ओरल परफॉर्मेंस को कौन करिया पाई जानिबा पाई ओके आपनकर चेकलिस्ट कौन चेकलिस्ट रे आपण मानू को अच्छी कि पिलाटार फेशियल एक्सप्रेशन केमती थिला से केमिति कहिला ए सब जिनस को नहीं आपन कहबे कि हां तार फेशियल एक्सप्रेशन ठीक थिला ठीक अछि भल कहिला ठीक अछि शुद्ध बनांतर मन जहाँ भी कहिला भल भल कथा कहिला portfolio will more appropriate for this question ओके से भी ठीक अछि ओके गोटे पेराल ओरल प्रेजेंटेशन सेटा को हम केमि जानबा ट्रू फॉल्स टेस्ट रे हमको दीटा आइदर ट्रू थिबो न हले फॉल्स थिबो ए जगह रे गोटे पिलार ओरल प्रेजेंटेशन बा परफॉर्मेंस को हम जज करि परिबा नै सर्वे भी नुहे ओके त आपन कोन लागु जी कोन हेइ थाइ पारे मेनली हम रहिला चेकलिस्ट आउ रुब्रिक भितरे ट्रू फॉल्स नुहे ट्रू फॉल्स बिल्कुल भी नुहे ट्रू फॉल्स आउ सर्वे नु ट्रू फॉल्स आउ सर्वे मु काटी देली आपणकर चेकलिस्ट रे कौन हुए ना गोटे पिला को हाँ कौन कौन कला कौन नाही गोटे पिलार ओरल प्रेजेंटेशन बा परफॉर्मेंस हमें जानुचंती केमे जानुचंती 30C ट्रू फॉल्स टेस्ट मोस्ट कॉमनली यूज हुए हमर चेकलिस्ट काहेकि एबे कहिली आमे गोटे पिलार ओरल परफॉर्मेंस गोटे पिला कौन कहिला जेमति हमर गोटे डिबेट हे जाऊ डांस कंपटीशन हो जहाँ भी हो आमे देखु जंत गोटे चेकलिस्ट थाए हाँ गोटे पिला एई जिंसर एतिक जिंस माने जेतिक पॉइंट पाया कथा सेतिक पाइची एइटर ता फेशियल एक्सप्रेशन बढ़िया थिला एइटर से बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहला ठीक अछि ए सब जिंस हम चेकलिस्ट रे मारी मारी गले तो मेनली कॉमनली हमर यूज हुए कोन चेकलिस्ट तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आकाश आर्ट कोचंती रुब्रिक दीटा ऑप्शन काटी देली बाकी जोटा बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज बेस्ट सुटेड फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई और अप्लाई नॉलेज इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन प्रैक्टिकल सिचुएशन रियल वर्ल्ड ओके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे परफॉर्मेंस असेसमेंट फॉर और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट तापर पियर असेसमेंट कोटा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आ कौन प्रैक्टिकल सिचुएशन अप्लाई करिया पई आकाश सी ठीक अच्छी 31C ओम प्रकाश कोचंदी सी अनुषा ओके मैम ओके सी 31 ओके परफॉर्मेंस असेसमेंट और प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट बा पिला माने पूरा बढ़िया खुशी कर देलो तुम माने मते आज बाकी गुडा मते ऑप्शन कहया पई पड़िबनी कारण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो गला ओके रियल वर्ल्ड able to solve real world problem और apply knowledge in practical situation performance assessment और project बाकी assessment ऊपर मते किछ जणे यार नै 31C yes very good समस्त को गोटे गोटे मोर चॉकलेट नियो आजी 32 what is the main advantage of using technology based assessment online quiz e-portfolios okay advantage of कौन using technology based assessment they are cheaper than traditional assessment they are less effective in evaluating complex skill they allow for faster feedback and can be more engaging for student they replace the need for teacher involvement in assessment ए माने कोन टीचर करो नीड को ही कोन कले रिप्लेस कर देले ठीक अछि 32C it allow for faster feedback and can more engaging student ठीक अछि सुरेश कुमार सेठी सी ओके ओम प्रकाश सी प्रोजेक्ट हो जी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम यप
यस जो माने 31 नंबर सी कहउचंती एकदम सठिक आंसर दे अलाउ फॉर फास्टर फीडबैक एंड कैन बी मोर एंगेजिंग फॉर स्टूडेंट ओके गोटे पिला बहुत निजको एंगेज कर से जगह कारण ताकू एटा गोटे न्यू मेथड रे हे जाउची से बहुत एंजॉय करिक भी से जिनसटा को कोन टेक्नोलॉजी को से पढ़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा मोर एंगेजिंग यस 33 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिफाइन क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग आंक भितर कोटा बेस डिफाइन करछि कहा को क्राइटेरियन रेफरेंस ग्रेडिंग को कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट of peers comparing student performance to set standard or learning objective assigning a grade based on a curve using the same grade distribution for all classes कोटा क्राइटेरियन रेफरेंस ऑलरेडी गोटे क्राइटेरिया हमर फिक्स्ड हे जाइछि गोटे स्टैंडर्ड हमर ऑलरेडी सेट हे जाइछि लाइक वी आर डूइंग दिस क्लास यस बहुत बढ़िया एग्जांपल जेमती आम ऑनलाइन यही जगह जेमती आम एंजॉय करी पढुचंती सेटा आम सेमती गोटे क्लास रे एंजॉय करी पढी परिबानी यस 33 बी कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग यस बी कहीदेली क्राइटेरियन माने आपनकर ऑलरेडी गोटे स्टैंडर्ड सेट थियो बाकी क्वेश्चन हमको ऑप्शन देखियार ही नहीं देई तो मु मारी देबी सइला कथा स्टैंडर्ड सेट अछि माने सइला कथा बाकी किछि हमर देखियार नाही ओके जो माने 33 बी कहउचंदी एकदम करेक्ट एटी देखंतु असेसिंग ग्रेड बेस्ड ऑन कर्व नाही यूजिंग सेम ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल क्लासेस नोप कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू दैट ऑफ पीयर पिलांकर माने कोन केबे भी कंपैरिजन आसेनी ग्रेडिंग सिस्टम हमर सेहित पई आसेला कि तू मोटो एते मार्क अधिक रख देलु तू से सब जिंस ग्रेडिंग उठा माने कंपैरिजन उठा पई हमर ग्रेडिंग सिस्टम आसेला 34 कौन कहला डायग्नोस्टिक असेसमेंट आर टिपिकली यूज्ड टू असाइन ग्रेड एट द एंड ऑफ ए सेमिस्टर आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग नीड्स बिफोर instruction begins the test student memorization of fact rank student against national standard जल्दी टाइम सरलानी क्लास एंड करिवा 34 बी आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग नीड्स बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन यस ओके डायग्नोस्टिक होची मेनली हमर कोन गोटे पिलार प्रायर नॉलेज को आइडेंटिफाई करिबा आ ताको रेमेडियल टीचिंग नबा दबा जो माने बी कहउचंदी एकदम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट व्हाट इज ए पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट इन टर्म ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल ओके पोटेंशियल बेनिफिट कार पीयर असेसमेंट इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल it allows student to practice giving and receiving constructivist feedback it minimize the need for any peer interaction in the classroom it eliminate the need for students to learn how to give constructive criticism it focus on grading rather than learning कोटा हवा यार आंसर जल्दी टाइम हो गलानी आज आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रोब्लेम हाँ डायग्नोस्टिक हो मेन तार मोटो आइडेंटिफाई करवा पिलार प्रोब्लेम आउ ताको रेमेडियल टीचिंग दब 35 ए कहउचंदी रूपश्री कंटा इट अलाउ स्टूडेंट टू प्रैक्टिस गिविंग रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यस 35 ए स्वागतिका ए आकाश 8 ए यस 35 ए मु आज क्लास को टिके जल्दी रे नौची कारण बाकी ऑप्शन हम सेमती किछि नाही बुझेला भलिया ऑलरेडी टाइम हे गलानी आ हमको बहुत सारा क्वेश्चन आगो करियर अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेल्फ असेसमेंट स्टूडेंट शुड only focus on what they did well and ignore areas for improvement self assessment mainly कौन करे स्टूडेंट मानक ऊपर कौन टा फोकस करे ओनली फोकस ऑन व्हाट दे डिड वेल एंड इग्नोर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्ट ऑन बोथ देयर स्ट्रेंथ एंड एरियाज फॉर ग्रोथ यूजिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया ओके रिले ओनली ऑन द टीचर्स फीडबैक एंड इग्नोर देयर ओन रिफ्लेक्शन फोकस ऑन कंपेयरिंग द ए जगह आपण मानकर आसीगला केतेटा नेगेटिव टर्म जेमती गोटे फास्ट आसीगला कंपेयरिंग देन आसीला ओनली एठी भी आसीगला ओनली तो फर्स्ट ए तीनटा को आपण काटी देबे तो ऑप्शन बी इज करेक्ट 36 बी जो मान 36 बी कहउचंदी करेक्ट यस 36 बी जो जगह आपण को ए जगह नेगेटिव टर्म आसीगला त आगे देखिबार नै बस सब काटी की पॉजिटिव टर्म मारे बढ़ी जबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन प्योर असेसमेंट हाउ कैन टीचर्स इंश्योर द प्रोसेस इज फेयर एंड अनबायस्ड
टीचर केमिति इनश्योर करिवे गोटे कोन एटा फेयर और अनबायस्ड असेसमेंट होउची बोली इन पीयर असेसमेंट रे बाय यूजिंग एनोनिमस पीयर असेसमेंट टू अवॉइड पर्सनल बायस allowing student to choose their peers to assess by providing no guideline for feedback एटा हमें क्लास रे भी करिथिले जदि आम गोटे गाइडलाइन प्रोवाइड न करिया पिला मानक भितर बायसनेस बढ़ी परिबो ये मो संग ताको मुटे भलो मार्क देई देबी एमती किछि बाय हैविंग ऑल असेसमेंट ग्रेड्स होल्डली बाय द टीचर से जगह रे पीयर असेसमेंट रो कोनोसी मोटो रहिला नै जदि गोटे टीचर ही सब प्रकार फीडबैक प्रोवाइड कर दोछि से जगह रे बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू चूज देयर पीयर टू असेस पिला ता निज सांग को चूज कर देबो ये मते असेस करिवो सेमिथिले कोन ए जगह रे बायसनेस बढ़िवो तो 37 ए इज करेक्ट बाय यूजिंग एनोनिमस पीयर असेसमेंट टू अवॉइड पर्सनल बायसनेस ओके जो मन 37 ए कहउचंदी एकदम करेक्ट रूपश्री ही कहउचंदी ठीक अछि नेक्स्ट बढ़ी जो 38 को व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर असेसमेंट रो की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन इट इज ऑलवेज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स ओनली द टीचर प्रोवाइड फीडबैक एंड स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन असेसमेंट पीयर असेसमेंट डजंट रिक्वायर स्टूडेंट टू गिव रिटन फीडबैक स्टूडेंट असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया कोठा पीयर असेसमेंट रो की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन 37 ए जो मन 37 ए कहउचंदी एकदम करेक्ट थिला फर्स्ट कहले स्टूडेंट असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया ठीक अछि एटा फिर पीयर असेसमेंट डजंट रिक्वायर स्टूडेंट टू गिव रिटन फीडबैक नहीं ओके ओनली द टीचर प्रोवाइड फीडबैक जदि टीचर ही फीडबैक प्रोवाइड करिवो से जगह पीयर असेसमेंट 37 हां जदि टीचर ही फीडबैक प्रोवाइड करिवो ओनली भी आसीगला मेनली ओनली तो गोटे नेगेटिव टर्म से जगह अपन तो काटि दे पारिबे ओके तापर कोन से इट ऑलवेज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स हे कले तो समेटिव कि हमर असेसमेंट आज ऑफ लर्निंग ए सब जिंस रे पळौची तो एटा हेई परिबो नै सेल्फ असेस बा पीयर असेसमेंट बा सेल्फ असेसमेंट हमर कोन कोथरे हो असेसमेंट आज लर्निंग रे जाउची ओके तो ऑप्शन डी हबो करेक्ट स्टूडेंट असेस द वर्क ऑफ देयर पीयर्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया 38D जो मन 38D कहउछथि से मानन गोटे छोट छोट चॉकलेट नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल इट प्रोवाइड्स as accurate final grade for each student it allows for continuous real time assessment of student skill behavior and learning progress it require minimal training for teachers and students to be effective it is solely used for summative assessment at the end of a unit ओके कौन कहला की स्ट्रेंथ कार ऑब्जर्वेशन एज एन असेसमेंट टूल ओके ऑब्जर्वेशन रा जल्दी 39B कौन कहते इट अलाउ फॉर कंटिन्यूअस रियल टाइम असेसमेंट फॉर स्टूडेंट स्किल बिहेवियर यस ऑप्शन बी इज करेक्ट जो मैंने भी 39B कहते एकदम करेक्ट अच्छे आकाश सूरज प्रधान भी अनुष्य प्रधान भी ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन जीबा ए की डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन इज दैट एटा आपण एटा टिके लंबा अछि पढ़िए भलसे पढ़ी करेंगे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होची जोटा हमर प्री डिफाइंड हेई अछि हम से ऑब्जर्वेशन करूचंती अनस्ट्रक्चर्ड माने एट द पॉइंट ए जगह रे हठात कि जोटा हमर ऑब्जर्वेशन होची सेटा होची हमर कोथरे जीबा अनस्ट्रक्चर्ड लेकिन स्ट्रक्चर्ड कौन जोटा आमर ऑब्जर्वेशन आगुरी करने आम प्लान कर माइंडसेट रखी ठीक अच्छे अपन पढ़े मु तथापि आंसर कहीदे आपन को आंसर बी इज करेक्ट स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नॉट फोकस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड इंटरप्रिटेशन whereas unstructured observation completely based on the objective data okay wait এটা কোনটা মু কই দেলি not focus on sorry এটা অপশন বি নো structured observation predetermined a predefined criteria and checklist while unstructured observation allow observer to record freely what they see option A is correct 40A जो मन 40A कहउछन एकदम करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा 41 one of the advantage of peer observation as an assessment tool advantage कौन peer observation to provide objective standardized data on student performance it allows student to evaluate their peer skill and behavior fostering collaborative learning and feedback it removes the need for teachers to be involved in assessing student behavior it ensures that students do not experience any biasness in their evaluation कोटा हबो observation as a tool
प्री डिफाइंड हाँ 40टा आमर प्री डिफाइंड थिला फास्ट कहला एटी प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड डाटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन टारे आमे कोन देछि ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिया जाइछि आ कोन स्टैंडर्डाइज्ड डाटा भी स्टूडेंट परफॉर्मेंस को नहीं की इट अलाउ स्टूडेंट टू इवैल्यूएट देयर पीयर स्किल एंड बिहेवियर फोस्टरिंग कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड फीडबैक यस जो माने ऑप्शन बी कहउचंती एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन ने हमर कोन करछि पीयर त निज स्किल बा बिहेवियर को ऑब्जर्व करू अछि जो माने 41 बी कहउचंती एकदम करेक्ट नेक्स्ट डेई पड़िया 42 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट रो बेनिफिट कोन It primarily assess memorization and recall content. It provide opportunity for student to engage in real world problem solving and apply knowledge. It eliminate need for peer feedback and self reflection. It guarantees a uniform standard of assessment across all student progress project. कोटा हे परिबो 42 आंसर आपण मानु केमते डायरेक्टली मिल जो कारण आगर ही थुआ है कारण फास्ट आम मेमोराइजेशन आसीगला रिकल आसीगला मेमोराइजेशन रिकल हो नेगेटिव टर्म ये जगह कटिगला ऑप्शन ए आसीगला बी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट एंगेज इन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आमको कौन करुच्ची रियल वर्ल्ड सहित कनेक्ट होगी गोटे जिनस करने को हेल्प करुच्ची ओके तो ऑप्शन बी इज करेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन आसीगला आम सेल्फ असेसमेंट रे पळि आसीबो नेक्स्ट 43 को आसीबा 42 रो ऑप्शन बी होची करेक्ट 43 कौन कौन देखिए which of the following is an example of a formative assessment tool that could be used during a project based assessment formative assessment देखि नियंतु आ भीतर कोनटा अछि फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मेड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ए पीयर रिव्यू कंडक्टेड एट द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गिवन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड कोटा example of formative assessment tool that could be used during project based assessment okay it's already 7:15 तो हमको आज 8 ही क्लास एंड करिया को पड़िबो 43C yes peer review conducted and at an intermediate stage of the project at the end हबनी फाइनल भी हबनी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी हब नहीं ठीक अछि आपण मानक पई होमवर्क रहिला 44 45 46 47 48 49 एंड 50 जेहेतु आम आज टी माइक टी डिले हो गला बेसी क्वेश्चन आम कर पारे बाकी जी रहीगला ये जो क्वेश्चन रहा से रहा आपण होमवर्क मत कौन देवे कमेंट सेक्शन ने ओके मत करी जनइबे कमेंट सेक्शन ने 43C ओके आ भी बहुत सारा क्वेश्चन रहीगला आम कर पारे नहीं 44 ରୁ 50 पर्यंत आपण माने मत कौन करेंगे जन देवे ए मैम काली क्लास हेब कि काली क्लास हेब ठीक अच्छे ऑलरेडी टाइम हो गला मु क्लास एटी एंड करुच्ची थैंक यू मैम